little changed. European markets trade mix and housing prices rise in 43 cities in the first quarter of the financial year 2023-24. प्रमुख घरेलू शेयर बाजारों में मामूली बढ़त, सेंसेक्स में मात्र 11 अंक और निफ्टी में 5 अंक की वृद्धि। एशियाई बाजारों में मामूली बदलाव के साथ हुए बंद। यूरोपीय शेयर बाजारों में रहा मिला-जुला कारोबार और वित्तीय वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में 43 शहरों में आवासीय भवनों की कीमतों में तेजी। कार्यक्रम में सबसे पहले बात शेयर बाजार की। प्रमुख घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त रही। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स केवल 11 अंक बढ़कर 65,087 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 5 अंक की मामूली वृद्धि से 19,347 पर पहुंच गया। व्यापक बाजार में बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.6% और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.8% की बढ़त के साथ बंद हुए। At the stock markets, the Sensex at the Bombay Stock Exchange ended with a gain of just 11 points to end the day at 65,087. The Nifty at the National Stock Exchange moved up 5 points to 19,347. In the broader market, the BSE Mid-Cap Index rose 0.6% and the Small Cap Index climbed 0.8%. Among the sectoral indices, the Realty Index and the Telecom Index were the leading gainers, climbing 1.4% each. The Consumer Discretionary Index advanced 1%. The Tech Index added 0.8%. The Auto, the IT and the Metal Index rose 0.7% each. The Commodities Index gained 0.6%. The FMCG Index and the Consumer Durables Index moved up 0.5%. Among the declining indices, the Bankex and the Utilities Index lost 0.6% each. The Power and the Oil and Gas Index fell 0.5% each. The Financial Services Index slipped 0.4% and the Energy Index shed 0.3%. Well, Jayanta, welcome to the show. Thank you very much. Jayanta, as we see today, most of the indices, barring of course the Bankex and the utilities, has risen, and also we have seen in the past 3 sessions now, Monday, Tuesday and now today Wednesday, as compared to the earlier week, there has been a steady, though today it was a bit of a subdued rise, but still we have. So what factors do you attribute to the banking index actually going down today? Well, I will be not utterly worried on the banking interest per se, because typically the banks have done exceedingly well in the recent past, and there has been almost a tepid, movement, or in that sense, lackluster movement in the last 2-3 weeks. So I don't think I'll be overtly bothered about how banks perform today. जी जयंता, आज जो बाजार की शुरुआत हुई बहुत अच्छी शुरुआत हुई थी, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता गया सेंसेक्स में हम वो देख रहे थे जो लाभ शुरू में था वो कम होता चला गया और तकरीबन दिन के हाईएस्ट से 350 अंक नीचे जाकर बंद हुआ। ये जो शुरुआत बहुत अच्छी हुई, सेंटिमेंट्स बहुत अच्छे थे, लेकिन आखिर में आकर के क्या असर, किन बातों का असर आप देख रहे हैं जो आज थोड़ा सा गिरावट के साथ या कम होकर के बाजार बंद हुआ है? देखिए, मैं मानता हूँ कि सिर्फ आज का जो भी थोड़ा बहुत गिरावट हुआ है, या मतलब ऑलमोस्ट लैकलस्टर मार्केट जिसको मैं थोड़ी देर पहले कहा, उसका मूल वजह 3-4 है अगर देखा जाए। एक तो विदेशी बाजारों में जो सिग्नल्स आ रहा है काफी सबड्यूड है, खास करके ये देखते हुए कि ग्लोबल स्केल में करेंसी मार्केट्स का वोलेटिलिटी एक कंसर्न है, और इसके अलावा यूएस गवर्नमेंट का जो क्रेडिट रेटिंग है उसमें एक डाउनग्रेड हुआ है, थोड़ा बहुत इकोनॉमिक स्लोडाउन का भी नजर है कुछ क्षेत्र में है। तो ऐसे स्थिति में ऑब्वियसली ग्लोबल क्यूज के साथ साथ हमारा घरेलू बाजार का भी एक रुख बनाया रहता है, और इस स्थिति में उस तरह का उछाल जो हम उम्मीद कर रहे हैं वो नहीं है। लेकिन पिछले हफ्ता जब हम लोग भी डिस्कस कर रहे थे स्टॉक मार्केट का मूवमेंट्स, उस टाइम में कहा था कि 65,000 का आसपास करीबन 800,000 पॉइंट ऊपर नीचे भी अगर मार्केट स्टेबिलाईज करता है, इट्स अ गुड सिग्नल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। प्लीज कंटिन्यू। और इसके अलावा जो घरेलू कंसर्न जो है इस वक्त वो है थोड़ा बहुत फूड इन्फ्लेशन का तरफ, जो मैं मानता हूं कि शायद अनदर 4 से 6 हफ्ते के अंदर थोड़ा बहुत काबू हो जाना चाहिए। थोड़ा ड्राई टेम्परेचर्स का चिंता आया हुआ है, बिकॉज रेन्स का बारे में
जो पहले आंकड़े थे कि रेंज का बहुत अच्छा असर हुआ है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिवनेस वाइज थोड़ा सा रिस्क रहा, खास करके एल नीनो की वजह से। और इस वजह से जैसे हमने देखा है कि कंज्यूमर प्राइसेस के ऊपर, खास करके वेजिटेबल प्राइसेस के ऊपर थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है। ये देखते हुए साथ में इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत जो चिंता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि Q2 का जो रिजल्ट है कॉर्पोरेट क्षेत्र में, उम्मीद किया जा रहा है काफी बॉयंट रहेगा। और साथ में देयर हैज बीन अ ग्रोथ इन द रिटेल पार्ट, जो इंडस्ट्री का एक मेजर मूवमेंट रहेगा, ये देखते हुए कि अभी एक फेस्टिवल सीजन शुरू होने वाला है शॉर्टली। जी। Well, Jayanta, talking of the economic slowdown globally, as you mentioned earlier, what factors would you attribute? Of course, the Ukraine crisis has been one of the factors which has been lingering for some time now. What other factors do you see in that? See, the important part to understand is in the Jackson Hole conference, people were expecting some, divine fireworks to happen in terms of interest rates. Now, the Fed chairman has spoken of the concept of a higher and longer, where the status of higher interest rates to remain longer are much more, prevalent than not happening. That's the first part. The second part is obviously the fact that there will not be any surprises per se. So it has been much looked forward to, speech. And in that sense, there has been, a sense of relief is a wrong phrase, but nevertheless, the sense of relief from the fact that no sudden surprises or no sharp hawkish futures is expected immediately from the US, rate of interest sort of a scenario. So that's an important factor. But as coming back, the issue of, as I said, economic growth in some of the stages falling behind and things like that, they would be impinging upon. Chinese retail market, I am told, I don't have ready figures, but I was getting some briefs in terms of the Chinese retail market slowing down to some extent. That obviously can also have some global effect on how, globally the stock markets are moving. Now, coming back to the domestic markets and, of course, the general economic scenario, what we have been witnessing for the past some time, that there has been rains which have been very deficient in different parts of the country. Now, this is also a matter of great concern, because mostly retail inflation and mostly talking of food inflation, it is just in time probably that it has started to come down a bit now, what with tomato prices and all kind of, after reaching that all-time high of almost 300 rupees per kg, now coming down to some tolerable level. How do you see this panning out in the coming days? Well, in terms of monsoons, now the census are official, and it says that it's one of the lowest monsoon rains ever in the last 8 years. Specifically, an extremely dry August witnessed almost pan-India. And if it remains so, specifically in September, it said that it could be the driest in more than a century. So we are talking of a bit of a severe concern over here in terms of rain deficiency and to what extent it will affect, as you rightly said, food prices and things like that. So obviously, tomatoes took a brunt. It was well discussed all over in the media and things like that. Now, to make it worse, the uneven distribution still continued, with the southern regions going further into deficit and the eastern regions largely deficiency persisting. So that also, speaks of what we are facing in terms of, the monsoon and the rains and how it's going to affect us. What's important to understand is what would this deficient southwest monsoon mean? Typically, the Kharif crop sowing is complete with an area of around 90% of major crops and things like that. So from those angles, technically, I think with one of the worst monsoons in almost the last 8 to 9 years, there would be some sort of economic impact. You just can't wipe it off and say, hey, despite this monsoon deficiency, we are doing fine. We would be staring in the near future, if not in the immediate future, of, say, higher prices in pulses, in cereals, and of course vegetables. Now you couple that with, a festive season where demand tends to increase, leading to a pressure towards inflation on the higher side. So this may have a sort of a truncated effect on how we go on from here. So obviously, climate would be playing an important role. And repeatedly, as I'm saying, given the fact this is one of the worst monsoons in the last 8 years.
जी। और जो आप ये कह रहे हैं कि मानसून का असर थोड़ा सा पड़ सकता है कृषि उपज पे, पैदावार पे, क्या इसका असर जो है हम शेयर बाजार पर भी देखेंगे? हाँ बेशक, जैसे मैंने कहा कि देखिए, काफी हद तक आप सबको पता है कि ब्याज दर का साथ साथ मार्केट में जो डिमांड होता है, ये सब निर्भर करता है ओवरऑल टू सम एक्सटेंट कि मॉनसून देश में कैसे रह रहा है और जिस वजह से डिमांड फ्लो कैसे होता है। अगर अब देखा जाए कि खास करके अगर स्ट्रेट फिगर्स का बात करूं, आज तक जब से इंडिया में कलेक्शन ऑफ डेटा लिया जा रहा है अबाउट मॉनसून, खास करके अगस्त का, कभी भी 190 का नीचे रेनफॉल हुआ ही नहीं है एज पर रिकॉर्ड एवर इन इंडिया। तो इस बार करीबन सिर्फ 160 रिकॉर्ड रेन्स रिकॉर्ड किया गया। सो दिस स्पीक्स ऑफ हाउ स्ट्रॉन्ग एंड सिवियर the El Nino effect has been over here, with only 13% rainfall received than expected. जी। और साथ में जैसे मैंने कहा थोड़ी देर पहले, और आपने स्टॉक मार्केट के ऊपर भी बात बताया, देखिए किसानों के पास पैसा अगर नहीं होगा और खास करके इस तरह का मंदी चलेंगे तो उसका सीधा असर तो डिमांड क्षेत्र में जाके, खास करके एफएमसीजी हो गया, रिटेल में जाके फर्क पड़ेगा। हालांकि रिटेल का आंकड़े बता रहे हैं कि थोड़ा बहुत डिमांड वापस आया है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि सस्टेन कितना कर पाएगा यहाँ पर। जी। और निकट भविष्य में क्या कुछ ऐसे ट्रिगर्स आपको लगते हैं जो कि जिससे कि मार्केट में हम तेजी की कुछ उम्मीद कर सकते हैं? देखिए ये तो खैर जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, अगर 65,000 का स्तर मार्केट में कहीं ना कहीं बरकरार है तो वी कंसिडर टू बी अ डिसेंट सिचुएशन। इट्स नॉट अ सिचुएशन जहां पे इट्स अ ह्यूज कॉज ऑफ कंसर्न। जी। कॉज ऑफ कंसर्न तब होता अगर जुलाई में भी रेनफॉल ठीक नहीं होता तो हम लोग को बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन का सामना करना पड़ता। लेकिन थैंक गॉड इट डिडंट हैपन। जी। जुलाई छोड़ के इट वाज अगस्त व्हिच परफॉर्म रियल बैड इन टर्म्स ऑफ मॉनसून। रहे मार्केट का जो रुख रहेगा, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि दूसरा तिमाही में कॉर्पोरेट क्षेत्र का जो नतीजे है, उस नतीजे के दौरान मार्केट में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट वापस बेशक आएंगे। और साथ में ये मत भूलिए कि हमारा विदेशी संस्थागत निवेशक जो है जी, वो लगातार खरीदे जा रहा है मार्केट में, मार्केट को सपोर्ट करके इस तरह से मार्केट को लेके भी आया है। आई डोंट थिंक दे आर लीविंग सून बिफोर डिसम्बर एटलीस्ट। सो ऐसे स्थिति में मार्केट का अगर सपोर्ट बरकरार रहता है इस लेवल में तो इट्स अ वेरी वेरी गुड फैक्टर। जी। और अब बात करते हैं रुपए के प्रदर्शन की। अंतर बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में आज रुपया 3 पैसे कमजोर होकर $1 की तुलना में 82 रुपए 73 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। और अब चलते हैं वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजारों की बात करें तो एशियाई शेयर बाजार आज मामूली बदलाव के साथ बंद हुए। जापान का निकेई 0.3% के लाभ में रहा। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.4% और चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में मामूली बढ़त रही। हांगकांग के हैंगसेंग में भी मामूली गिरावट रही और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.1% के नुकसान के साथ बंद हुआ। यूरोपीय बाजारों में अंतर्दिवसीय कारोबार में लंदन का फुट्सी 100 0.4% की बढ़त में चल रहा था, जबकि फ्रांस का कैक 40 और जर्मनी का डेक्स दोनों 0.3% के नुकसान के साथ कारोबार कर रहे थे। और यूरोपीय अर्थ जगत की और खबरों की ओर बढ़ें तो यूरोपीय संघ की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी के आज जारी आर्थिक आंकड़ों के अनुसार सालाना आधार पर जुलाई में आयात खर्च में 13.2% की कमी दर्ज हुई है। जनवरी 1987 के बाद से आयात खर्च में ये सबसे बड़ी गिरावट देखी गई है। इससे यूरोपीय संघ की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश पर महंगाई के बढ़ते दबाव का पता चलता है। इस सप्ताह के अंत में यूरोपीय संघ के खुदरा महंगाई से जुड़े अगस्त माह के आंकड़े आ सकते हैं और इसके पिछले महीने 5.3% से कम होकर 5.1% पर आने की उम्मीद है। इस बीच यूरोपीय सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड ने सितंबर में ब्याज दरों में बढ़ोतरी में ठहराव के संकेत दिए हैं। And moving on to the US markets now, on the Wall Street, key indices ended sharply higher yesterday, lifted by Tesla and Nvidia.
and other mega cap growth stocks after a drop in monthly job openings cemented expectations of a pause in interest rate hikes by the US Federal Reserve. The Dow Jones Industrial Average added 293 points or 0.9% to 34,853. The S&P 500 climbed 64 points or 1.5% to end at 4,498, and the Nasdaq index jumped 1.7% to 13,944. The Labor Department's job openings and labor turnover survey showed the number of job openings stood at 8.827 million in July, falling for the third straight month and signaling easing of the labor market pressures. But a report from the Conference Board showed consumer confidence in the United States fell to 106.1 in August compared with expectations of 116. Interest rate futures signal an 87% chance the Fed will keep rates steady at its September meeting and a 54% chance it will keep rates on hold through November, according to the CME Group's FedWatch tool. Now, Jayanta, as reports are coming in that the Fed mostly would be keeping rates steady at its September meeting and a 54% chance that it will keep the rates on hold through November. Now, what would be the rollover effect, if at all there would be, with the RBI meeting in its successive MPCs from now on? See, one thing we should understand: rate is not something which is decided on. Rate of interest is not something which is decided on emotions and the status of what media reports on our land. Mm-hmm. They are completely dependent on hardcore statistics. And as I said, statistics says at this point of time, globally as well as domestically, inflation is not going away soon as it was expected. It may be holding on to these levels. So the concept of higher for longer, which means a higher interest rate for a longer period of time, not an increased interest rate. So we might not see, huge jumps from here, but at least holding on to these levels for a longer period would be a likely instrument by MPC to control inflation from here. So let's see how it pans up. If you ask me very clearly, are we seeing interest rates to go down in the immediate future? I don't think RBI is in a desperate hurry to do so. जी, और उधर ये यूरोपीय सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड ने भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी में ठहराव के संकेत दिए हैं. ये संकेत क्या बता रहे हैं? देखिए, बढ़ोतरी में ठहराव और बढ़ोतरी का साथ साथ उसको रोकवा के ब्याज दर गिरवाने का बहुत अंतर होता है जी. जैसे मैंने कहा कि खुशखबरी इस बात में है, खास करके जो लोग इंटरेस्ट रेट ट्रैक कर रहे हैं, ऑब्जर्व करते हैं पूरा वित्तीय क्षेत्र विश्व भर में, खुशखबरी इस बात में है कि भाई इस स्तर में कहीं ना कहीं स्टेटस को मेंटेन करने का एक आशा दिखा जा रहा है. इसमें यहाँ से और वृद्धि नहीं होगा, लेकिन साथ में अगर इस स्टेटस को भी अगर मेंटेन किया जाता है, हमें ये देखना है कि इकोनॉमी विशेष फ्रॉम नेशन टू नेशन हाउ रेजिलिएंट दे आर टू एब्जॉर्ब एट दीज रेट्स फॉर इकोनॉमी टू ग्रो फ्रॉम हियर. तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट चैलेंज टू अंडरस्टैंड, जो समय के साथ साथ हमें पता चलेगा. लेकिन ये है कि अगर आप खुशखबरी तब होगा देश में, विश्व भर में, जब सिग्नल किया जाएगा कि हाँ भाई, यहाँ से अभी हम अगले 6 महीने के दौरान करीबन 50, 100, 150, 200 बेसिस पॉइंट रेट कट हम दे सकते हैं. तो उस तरह का खुशखबरी अभी तक आया नहीं है मार्केट में. बेशक कोई बहुत वृद्धि होने का उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर ये स्तर भी बरकरार रहता है इस वक्त, तो वो मैं मानता हूं कि शायद वो भी एक चिंता का विषय रहेगा, क्योंकि जो बॉर्डर लाइन पे काफी सेक्टर्स हैं जो थोड़ा बहुत अब उन्होंने झेल लिया अगले 6-8 महीने से, लेकिन आने वाला 6-8 महीने झेल पाएंगे कि नहीं. हम देखे हैं किस तरह से लेबर कट हुआ है, हम देखे हैं किस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है आईटी सेक्टर में. तो ये सारी स्थिति ऐसा है कि सुधर नहीं हुआ है. तो ऐसे स्थिति से जैसे मैंने कहा कि ब्याज दर को इस वक्त मेंटेन करना भी इस स्तर में कितना हद तक हार्मफुल हो सकता है. आई मीन हार्मफुल इज अ रॉन्ग वर्ड,
बट कितना हद तक वो इफेक्ट कर सकता है इकोनॉमिक ग्रोथ को, दैट्स समथिंग व्हिच हैज टू बी सीन। जी, एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की बात करें चीन की, तो चीन की अर्थव्यवस्था, चीन को लेकर के जो खबरें आ रही हैं, वहाँ की अर्थव्यवस्था को लेकर के जो खबरें आ रही हैं, वो ये बता रही हैं कि गंभीर समस्या से जूझ रही है चीन की अर्थव्यवस्था, क्राइसिस है वहाँ पर, और ख़ास तौर पे जो वहाँ का जो रियल एस्टेट का जो वहाँ का एक सेक्टर है वो बहुत बड़े कर्ज के दबाव में है। चीन की अर्थव्यवस्था से जो ये खबरें आ रही हैं, ये एशिया और कुल मिलाकर के पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पे क्या असर डाल सकती हैं? आपका क्या विचार है इसमें? देखिए, एक तरफ आंकड़े ये कहता है कि रियल एस्टेट क्षेत्र में चीन में एक दबाव है, देयर इज अ ह्यूज डेट प्रेशर, डेट बर्डन, रादर प्रेशर तो गलत बोल रहा है, डेट बर्डन है इस वक्त। लेकिन साथ में ये भी सच है कि पिछले 2-4 हफ्तों के दौरान विदेशी संस्थागत निवेशक कहे या जो ग्लोबल निवेशक है जिनका पूरा वर्ल्ड में वो लोग नेशन विशेष देखते हुए अपना निवेश करते हैं, देयर हैज बीन सम इंटरेस्ट कमिंग बैक टू चाइना एज अ इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। नाउ एशिया क्षेत्र में इंडायरेक्टली बुरा खबर है, क्योंकि काफी हद तक ये निवेश हमारा देश में हो रहा था, शायद यहाँ से कुछ कम होकर चीन की तरफ जाए। ऑब्वियसली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम चीन के साथ हम लोग कम्पीट नहीं कर सकते, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक साइज, स्ट्रक्चर, मार्केट डेप्थ चीन काफी आगे है। तो ऐसा स्थिति में ये जरूर है कि चीन में रियल एस्टेट क्षेत्र हो जाए, वाई रियल एस्टेट, इवन मेटल्स का भी दुनिया भर में बहुत ज्यादा असर हम देखे हैं, डिपेंडिंग ऑन चाइना का प्राइसेस, चाइना का डिमांड सप्लाई। तो ये सारे असर हमें समझना है अगले 2-3 महीने में किस तरह के आंकड़े ले रहे हैं, और साथ में ये भी समझना है कि जैसे मैंने कहा कि कहीं पे अगर इंटरेस्ट रेट का गिरावट का ट्रिगर मिलता है तो रातों रात ये सारी चीजें बदल जाएंगे, बिकॉज जिसे कहते हैं मूड ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी, वो काफी हद तक पूरा ड्राइव करेगा मार्केट को, निवेशकों का रुचि किस देश में जाके निवेश करे, और साथ में कंपनी विशेष का जो उत्साह है नया नया क्षेत्र में जाके वो निवेश करके नया नया चीजें बनाए या आगे ग्रोथ करे, ये सारी चीजों को। Well, Jayanta, even as we talk about the slump in the realty sector in China, with almost many wondering that would it be the Lehman moment for China? Now, it's so ironic that coming back home, the housing prices here rose in 43 cities. Yeah, in the first quarter of 2023-24. Now, this is the data according to the National Housing Bank. Now, in a housing price index, that is HPI, published by the National Housing Bank, that is NHB, the regulator for the housing finance companies, it said that the home loan rates are still lower than the pre-pandemic rates, leading to a healthy affordability overall. Now, among the cities with the sharpest appreciation in the realty prices, Ahmedabad witnessed a 9.1% appreciation in the property prices, while Bengaluru posted 8.9% growth and Kolkata registered 7.8 increase in the property prices during the April to June 2023 period. The 50 city housing price index, based on valuation prices of properties collected from banks and housing finance companies, recorded an annual increase of 4.8% year on year, Y on Y, during the first quarter of this financial year as compared to 7% a year ago. Well, Jayanta, this is so ironic. I would say that on the one hand, talking of the largest economy in Asia, China, the realty sector going down in dumps, while we are seeing a big uptake, a big green shoot coming up now. How do you see this? See, what I perceive is the fact that you can compare the rate of interest from the pre-pandemic era, but these demand for housing sector has grown up. If you consider the last 9 months, the rate of interest has steadily increased. So it's extremely important to understand that there is money being pumped into this sector with future sort of a perspective or a vision to see that prices are going to go up further. It's good to understand that the interest has come back in the housing sector, which plays a major part in almost every single investor, consumer, and a taxpayer, at all levels. So it's a good story. It's a good factor that maybe the housing sector interest has come back. But then, as I said, there is a huge, status situation also where we see that the overall interest of a lot of undelivered projects has remained so in the last 3 years, 5 years, or even more than that. So that's also an important concern of what to do with the inventory which has already been existing. But then, as I said, if you do a devil's argument,
it comes back to the fact that despite the inventory, people are rushing to buy houses, which led to this increase in price. So somewhere down the line, there is always a blue sky ahead to look forward to. And we are happy that the real estate sector is seeing some growth, even at high interest rates. Imagine what would be happening if the interest rates are lowered from here on in the next 6 months. That's right. Moving on to oil now. The global crude oil prices extended gains today after industry data showed a large draw in crude inventories in the US, and as a hurricane in the Gulf of Mexico kept investors on the edge. So the Brent crude oil futures for October gained 42 cents to trade at $85.91 a barrel. The US crude futures rose 50 cents, $81.66 a barrel. Meanwhile, the US crude stocks fell by a bigger than expected 11.5 million barrels in the week ended August 25, citing American Petroleum Institute figures yesterday. Janta, very briefly, where do you see oil going from here? Well, as I said, if there is a depressive sort of a scenario globally, if not depressive, at least a subdued scenario, I don't see much of a vertical forward movement of oil prices. There would be some intra-week or even intra-month, spikes. But beyond that, I don't see a huge major growth forward in terms of oil. Okay. और अब कीमती धातुओं की बात करें तो दिल्ली सराफा बाजार में आज सोने का भाव 300 रुपये उछलकर 60,100 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी भी 400 रुपये की तेजी से 77,500 रुपये प्रति किलो के स्तर पर रही। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1,936 प्रति औंस के स्तर पर रहा। जयंता, सोने की बात करें, गोल्ड की बात करें तो अब फेस्टिव सीजन भी आ रहा है। क्या यहाँ से हम और ऊपर जाता हुआ देखेंगे सोने को? वी आर क्वाइट होपफुल। कितना दर तक हद तक ऊपर जाएंगे ये वक्त बताएगा 2000 का साथ साथ। लेकिन अगर निवेशक को उससे देखें तो उसमें चांदी में जिस तरह का उछाल आया हुआ है, इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड कॉल। जो लोग मेटल में रुचि रखते हैं निवेश करने के लिए, चांदी में जाके अलग से थोड़ा स्टडी करके वहां पे भी कुछ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढें। All right, Jayanta. Now, one question which would be, quite interesting for many of our listeners. How do you see the slash in the LPG prices of 200 rupees kind of panning out on the, mostly on the retail inflation? Well, this is obviously a move which has been done, keeping in mind to, lower the burden for people in that particular class, especially the middle class and the lower middle class, even a bit below. So, as I said, fuel prices are an important mover and shaker in a kitchen budget in any household. So I think this particular move has been the government's way of putting forward and easing some of the pains at this point of time. I think it will also keep in lieu of the fact that vegetable prices and all might go up a bit from here on in the next couple of months. So that could be some sort of a bringing in a headroom to ease the present burden. जी, जयंता दास, आप कार्यक्रम में शामिल हुए और इतनी उपयोगी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। And before we wrap up, the headlines once again. At the stock markets, Sensex gains just 11 points. Nifty moves up 5 points. Asian markets end little unchanged. European markets trade mix. And housing prices rise in 43 cities in the first quarter of the financial year 2023-24. प्रमुख घरेलू शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ हुए बंद। सेंसेक्स में मात्र 11 अंक और निफ्टी में 5 अंक की वृद्धि। एशियाई बाजारों में भी मामूली बदलाव रहा। यूरोपीय शेयर बाजारों में रहा मिलाजुला कारोबार और वित्तीय वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में 43 शहरों में आवासीय भवनों की कीमतें बढ़ी। That's all in this edition of Market Mantra from the entire team here. It's goodbye till we meet again tomorrow. This is Akashvani, the news read by Renuka.